Bismillahirrahmanirrahim. Let's start today's lecture, which is continuation of the yesterday's lecture. So let us see. Last time we were discussing subsonic and supersonic nozzles. Subsonic and supersonic nozzles design. So there was a whole procedure starting from A, B, C, D, F, G, H, and we reached up to S or T somewhere. So let us see where are those steps here. These are the steps A, B, C, D. These are the results of thermodynamic analysis of nozzle and diffusers. This is actually the whole methodology, how to start and how to end the design of a supersonic or subsonic nozzle. So we have reached up to this point, S or T or S T here. You know, this formula P naught is equal to P plus rho C square by 2. This is talking about total pressure of a flow of a stream. So in total pressure is sum of static pressure and dynamic pressure. So rho in fluid mechanics, it is called static pressure and dynamic head. Static head and dynamic head, P plus rho C square by 2. So P is static head, rho C square by 2 is dynamic head. Total head is equal to static head plus velocity head. Why we use this total pressure, P naught and T naught? Total pressure, total temperature. Actually, they are function of velocity. Since in previous derivation, where C, velocity of fluid is equal to under root 2 delta H or under root 2 Cp delta T for ideal gas and delta H for steam. So the derivation of that formula, it was assumed that inlet velocity is almost negligible, it is almost zero. But in case inlet velocity is not zero, it is not negligible, then we have to take care of C1 square by 2 also in steady flow energy equation. Then formula gets complicated. So instead of complicating that formula, where we have assumed that C1 is equal to 0, we keep taking velocity as a velocity as a stagnation properties, function of stagnation properties, and that is P naught is equal to P plus rho C square by 2. The reason is in front of nozzle and just at the entrance of nozzle section 1. But we assume that at section 0, away from before section 1, before entering the nozzle, there is another section 0 or not, where velocity is 0. That means area is infinite. So that point is away from the nozzle, just much before the entrance. It may be a huge tank, a receiver, it may be open space around the nozzle, in front of the nozzle. So that is why when we take P naught into account and T naught into account, that means that we are taking account of C1, velocity at the entrance, not 0. So if nozzle inlet velocity is not negligible, then we use stagnation properties, and this has been explained in this figure, which is 10.19. And it's coming below here. I've told you that this is section 1, this is section 1, this is section 2. This is just entrance of actual nozzle is 1, not 0. But you can see imaginarily, you can assume that nozzle starts from 0, then velocity at the inlet will be 0. If we take velocity, C1 is equal to C naught. So that is why our previous calculation, our previous derivation of formula C is equal to under root delta H, under root 2 delta H. So that will be true. So this is the technique used there. So C is equal to under root 2 Cp T naught
1 minus T. T naught 1 takes into account velocity at the 0, not at 1. T naught 1 is the stagnation temperature at section 1. Naught is for stagnation, so 1 is section 1, or T is just temperature at any other section between 1 and 2. So similarly, P critical upon P naught 1. Critical is the throat, so critical section is the throat, and maximum velocity happens at the throat over here. We want to calculate this property at this throat, then we use this relation, P critical upon P01. So previously it was P critical upon P1, now it is 0, 1 or not 1, because we are taking into account velocity at the entrance not negligible. So this we have derived. So 2 upon gamma plus 1 is to gamma upon gamma plus 1. We assume isentropic process for the nozzle, and Tc upon T naught 1 is equal to 2 upon gamma plus 1. This is the use of stagnation properties. Now, the pressure at the inlet to the nozzle is equal to stagnation pressure P naught. It is called total pressure. If velocity is 0 at the inlet section, then this figure is shown that an imaginary plane 0, 0, plane 10, 19 figure in front of you, in front of actual inlet 1, 1, by expanding the nozzle. Nozzle has been expanded from 1 to 0, So in that case, we can use stagnation properties, stagnation pressure, stagnation temperature at the inlet. C, that will be P naught 1, T naught 1. So C1, then it is taken into account at section 1, 1. So after that, we will discuss, can we apply these nozzle equations on steam? The answer is yes. But we have to take care that steam may be saturated, steam may be supersaturated at the entrance to the nozzle. If steam is supersaturated, then it is at state 1. And I have shown 3 diagrams. The process of expansion in a steam nozzle. There are 3 diagrams. Let me make a little less volume size. There is 39, 5. Now you can see all these 3 diagrams on the screen. 1, 2. The expansion process is in the nozzle from pressure P1 to P2. These are isobars on TS diagram. On the left hand side, first diagram is TS diagram. On right hand side, another diagram is HS diagram and Falsi entropy diagram. And this is what I call Mollier chart. And I have given you actual Mollier chart to the scale of steam. You will use that steam table chart HS diagram, and you will find over there from conditions at 1, temperature and pressure. You can locate this point, and from there vertically down, straight down line draw on P2. You will get state 2 properties. From here you can read what is the entropy, what is the enthalpy on this chart. So this is TS diagram. This is from here you can read T2. From here you can read H2 on the ordinate, on the y-axis. There is another diagram, PV diagram. In case you want to find how it is drawn, how process takes place on PV diagram, it is over here. 1, 2 process is shown here. First process takes place from 1 to A on all diagrams, 1 to A. A is the located on saturation line. So superheated steam, when expanded in nozzle, pressure drops and temperature drops, it starts condensing. It reaches saturation point. A is the saturation point, but it will not condense because flow is very fast. Flow is adiabatic and very fast. So it is almost adiabatic isentropic and goes down up to point 2. 2 is the P2, up to pressure P2. And here is point P2 on HS diagrams, very clear. It is below R. Here on TS diagram, it is above the R. Here, point up to A1 is like this, and from A to 2 process is different.
and here you can see R separate from R is on same pressure P2, but it is its volume is less. So this was experimentally discovered, and steam under this condition after point A to R is called as supersaturated steam. It is also called as supercooled steam. Remember these two names: supersaturated or supercooled steam. Its properties cannot be determined, only it can be measured by experiment in the thermodynamics lab. For steam nozzles, all equations of air supply with only difference. यानी कि जितने भी हमने एयर के लिए आइडियल गैस के लिए लॉज अभी फार्मूले डिराइव किए डिफाइन किए नोजल के लिए, तो उसमें वही हम स्टीम के लिए अप्लाई करेंगे. द ओनली थिंग इज इन केस ऑफ ideal gas, for example, air, gamma is Cp upon Cv and its value for air is 1.4. But in case of superheated steam, up to from point 1 to 8, we split the analysis into two parts. First, from superheated to saturated level, then from saturated to supersaturated. So for air के लिए gamma तो ये है, लेकिन steam के लिए superheated steam state 1 से लेकर 8 तक you can use this kappa. Here kappa is the not Cp upon Cv, but it is the isentropic index like gamma for air, for steam instead of air. Now K is equal to 1.3 for up to saturated superheated steam, and from saturated downwards up to supersaturation, K is equal to 1.135. In that region, you will use from A to 2, you will use this law, PV raised to 1.135. So in this way, you can solve steam nozzle problems also, just like air nozzles or ideal gas nozzles. So this was all about that lecture. So now I will share with you another one. Everybody there? Actually, this is PDF file number 32. I have just finished file number 30. I will skip 31 now, but it is ready, and I will share with you as a reference material when I send all these reference material when chapter is finished. The reason is in file number 31, I have just done derivation work. How to derive these relations? We have already mentioned those equations in PDF document, PDF file number 30, which I have just finished. वो सारे फार्मूले इधर हैं, लेकिन ये फार्मूले डिराइव कैसे होते हैं? From the principles of thermodynamics, PV raised to gamma is equal to constant. यहाँ से हम start करते हैं, और इन सारी और m dot is equal to rho AC or AC upon V, और दूसरी जो m dot is equal to rho AV, mass flow rate और steady flow energy equation लिखते हैं. Enthalpy plus kinetic energy plus potential energy at inlet is equal to enthalpy plus kinetic energy plus potential energy at the outlet. वहाँ से हम डिराइव करते हैं. तो ये सारा प्रोसीजर एक फाइल में मैंने एक लेक्चर की सूरत में बना के दे दिया है. How to derive equation number these equations which are used for nozzle design. Derivation एक अलग टेक्निक है कि how to use mathematics to solve the problems, to come at to derive the formula. So बाज़ बार ये भी पूछ लिया जाता है कि आपने फार्मूला तो यूज कर लिया, लेकिन इसको प्रूव बताओ. Prove that this is equal to this. So for that अलग मैंने बना दिया है. तो वो हमने डिस्कस नहीं करेंगे. प्योर मैथमेटिक्स कॉलेज मैथमेटिक्स है और बेसिक थर्मोडायनामिक्स है, जो हमने थर्मोडायनामिक्स 1 में जो चीजें पढ़ा दी, उनका रिपीटेशन है. That you will see by yourself and read it and do it. So now what I am going to discuss is file number 32, PDF file number 32, next file. And the topic is of this file is we will discuss off design, operation of subsonic, sonic and supersonic nozzle. Subsonic वो होता है जहाँ intense velocity, जहाँ velocity of nozzle जो है ना sound तक नहीं पहुँच. Sonic वो होता है जिसमें velocity of sound के बराबर velocity हो जाती है. और supersonic उसमें होता है जब
एग्जिट पे वेलोसिटी इतना प्रेशर ड्रॉप होता है कि एग्जिट वेलोसिटी सुपरसोनिक हो जाती है। तो इन नोजल्स में इसकी जो ग्राफ की मदद से समझना बहुत आसान है, क्योंकि एक्चुअल ये तो डिजाइन के लिए तो हम एज्यूम करते हैं कि इनलेट पे ये प्रेशर है, आउटलेट पे ये प्रेशर है, लेकिन इसकी अमली तौर पर प्रैक्टिकल लाइफ में कोई गारंटी नहीं है कि जो प्रेशर हमने कैलकुलेशन में दिया हुआ है वही आपको हवा में भी मिलेगा, हवाई जहाज में भी मिलेगा, जमीन पे भी मिलेगा, और हवा में भी 10,000 मीटर के ऊपर बुलंदी पे यही। तो अगर ऑपरेटर की मर्जी है और एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि आउटलेट प्रेशर क्या है और इनलेट प्रेशर क्या है, तो अगर ये वेरी करना शुरू कर दे, इसको हम स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर वो जो डिजाइन कंडीशन होती है, ऑफ डिजाइन वो है जो डिजाइन से हटकर की जाती है। तो कोई भी मशीन, चाहे वो नोजल हो या रॉकेट हो, मिसाइल हो या एयरक्राफ्ट हो या ट्रक हो या कार हो, उसको किसी खास कंडीशंस के लिए डिजाइन किया जाता है, वो फुलफिल करती है कि इस कार की स्पीड क्या होगी, पावर क्या होगी, आरपीएम क्या होगा, तो वो उसी पे चलाना जरूरी नहीं है, लेकिन डिजाइन उसके लिए होती है। जब आप उस पर डिजाइन उससे हटकर चला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उससे ज्यादा कैपेसिटी पे चला, यानी उससे कम कैपेसिटी पे चला रहे हैं, तो फिर क्या होगा। तो उस सूरत में ये जरूरी है जानना कि ऑपरेटर को कि कोई ऐसी हरकत न करे जिससे मशीन खराब हो या हवाई जहाज क्रैश कर जाए। तो थियरी उसकी ये है कि देखिए, एक अगर हम ये जो है ना एक्स एक्सिस पे हम ये समझे कि ये नोजल की लेंथ है फ्रॉम 1 to 2, टोटल लेंथ इसकी, और 1 पे इसकी एंट्री है, 2 पे एग्जिट है, तो P1 एट इनलेट प्रेशर है, P2 आउटलेट प्रेशर है। अब आउटलेट प्रेशर को इनलेट प्रेशर कांस्टेंट रखें क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आउटलेट पे आप बाय पंप वैक्यूम पंप आप प्रेशर डिक्रीज करते जाए। तो जब आप प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो उसका वेलोसिटी नोजल के अंदर से प्रेशर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, P1 से P2 की तरफ आना शुरू होगा, लेकिन इन द मीन टाइम वेलोसिटी इस तरह बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, और जहाँ मिनिमम एरिया है ये एरिया अगर हम मेजर करें तो इनलेट पे ये एरिया है, मैक्सिमम सेंटर में यानी थ्रोट पे ये एरिया है, और एग्जिट पे फिर ये कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल है। तो इसकी जो प्रोफाइल है कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग है, तो जहाँ एरिया का ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी का ग्राफ दिया हुआ और स्पेसिफिक वॉल्यूम भी पहले आहिस्ता इंक्रीज होता है थ्रोट के बाद वेरी स्टीप इंक्रीज होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहा है और वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो ये तीन लाइनें आपको शो कर रही है अबाउट वेलोसिटी, एरिया, चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड एरिया अलोंग द नोजल। ये नोजल की प्रोफाइल है, ये कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल। अब हम डिस्कस करेंगे द ग्राफ ऑफ मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया, यानी m dot upon a वर्सेस प्रेशर रेशो यानी P2 upon P1 ऑफ कन्वर्जेंट नोजल, सिर्फ कन्वर्जेंट नोजल। प्रैक्टिकली इसको यूं किया जाता है, देखिए नोजल ये है सिर्फ 1 से लेकर 2 तक, P1 इनलेट कंडीशन है, P2 आउटलेट कंडीशन। इसको क्रिएट कैसे करते हैं कि आपने यहाँ एक पंप लगाया हुआ है इस साइड पे जो सक कर रहा है, यानी एग्जॉस्ट फैन लगाया हुआ है, एग्जॉस्ट पंप लगाया हुआ है। तो इसको फ्लो रेट आप यहाँ वाल्व की मदद से, बटरफ्लाई वाल्व लगाया हुआ है, इसको ओपनिंग को कम ज्यादा करने से इसकी वेलोसिटी फ्लो रेट बढ़ेगा। जब फ्लो रेट बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इस वाल्व को मैनिपुलेट करके आप शुरू में एक वेलोसिटी रखते हैं, फिर दूसरी, तीसरी, और इससे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट करने से जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह बनेगा। वाई एक्सिस पे क्या है, मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया m डॉट अपॉन A2। एक्स एक्सिस पे क्या है, प्रेशर रेशो P2 अपॉन P1। ये कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल है, ये सॉरी कन्वर्जिंग नोजल है, यानी सोनिक वेलोसिटी तक अचीव करेगा। मैक्सिमम वेलोसिटी थ्रोट पे होती है, उससे आगे चूंकि सोनिक वेलोसिटी अचीव हो जाती है मिनिमम एरिया पे, तो उसके बाद इससे ज्यादा स्पीड नहीं हो सकती, फ्लो रेट उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। हम फ्लो रेट की बात करते हैं, स्पीड तो बढ़ेगी अगर आप डाइवर्जिंग नोजल में इसको ले जाएंगे, लेकिन m डॉट अपॉन a विल रिमेन कांस्टेंट, चाहे नोजल कोई भी हो। जहाँ मिनिमम एरिया होगा वहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी, तो वो मैक्सिमम मास फ्लो रेट होगा। तो आप देख रहे हैं कि स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं, यहाँ P2 अपॉन P1 ये मेरे राइट साइड पे एंड पे, यहाँ से हम इसको पढ़ेंगे लेफ्ट से, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ, इधर से नहीं पढ़ेंगे। ये डॉटेड लाइन जो है ये इमेजिनरी लाइन है, ये थ्योरेटिकल लाइन है,
एक्चुअल लाइन ये है सॉलिड लाइन, राइट से P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू 1, तो मास फ्लो रेट कितना हो गया 0। सीधी सी बात है P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब P1 इज इक्वल टू P2। अब आपको मुझे बताया कि एक पाइप ने एक सिरे पे दूसरे सिरे पे एक ही प्रेशर यानी उसको हवा में रख दे, क्या उसमें से मास फ्लो रेट होना शुरू हो जाएगा? नहीं हो। जब तक के एक पाइप का सिरा खुला छोड़ दें, दूसरे पे पंप लगा के हवा खींचना शुरू न करें, आप उसको मास फ्लो रेट क्रिएट नहीं कर सकते। इसीलिए जब P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है 0 मास फ्लो रेट है, तो ग्राफ यहाँ से शुरू होता है। जो ही आप वाल्व खोलते हैं और मास फ्लो रेट बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये आप देख रहे हैं वर्टिकल एक्सिस ये बढ़ रहा है, लेकिन P2 अपॉन P1 डिक्रीज हो रहा है। यानी एग्जिट पे प्रेशर जितना डिक्रीज करेंगे मास फ्लो रेट बढ़ेगा और एक वक्त आएगा कि पीक तक पहुंच जाएगा। मजीद कितना भी प्रेशर ड्रॉप करें, अब P2 अपॉन P1 की ये वैल्यू जो है ना 0.528 है। ये एयर के लिए आप पिछले आपने जो फॉर्मूले आपने लिखे उसमें अगर इसको डालें एयर का गामा इज इक्वल टू 1.4, तो यू विल गेट PC अपॉन P क्रिटिकल, यानी कि P1 अपॉन P क्रिटिकल is equal to 0.528. So P2 अपॉन P क्रिटिकल की वैल्यू अगर आप ये रखेंगे 0.528 एग्जिट प्रेशर डिवाइड बाय क्रिटिकल प्रेशर यानी कि थ्रोट वाला प्रेशर, तो दिस रेशियो विल बी इक्वल टू 0.528 पर एयर। अब ये जो मैक्सिमम कर्व है यहाँ खत्म हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन में शिफ्ट हो गई। ये पहले पैराबोला थी, यहाँ पीक पे आकर ये सीधी आगे चली गई और कोई मास फ्लो रेट चेंज नहीं हो रहा। m डॉट अपॉन ए कांस्टेंट हो जाता है इसके बाद। क्यों? कि ये थ्रोट है वो मिनिमम एरिया है, वहाँ मैक्सिमम फ्लो पहुंच चुका है और मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो चुकी है। अब उससे मजीद कितना भी P2 अपॉन P1 ये 0.528 है ना, इसको 0.3 कर लो, 0.1 कर लो, 0 कर लो, ये मास फ्लो रेट उतना ही रहेगा जो यहाँ अचीव हो चुका है। तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, और दिस इज हाउ वी डिस्कस मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया graphical form. Now we will study graph of pressure drop through a convergent nozzle and formation of shock waves outside the sonic nozzle. ये वो उसी तरह का convergent nozzle है और अब हम प्रेशर यानी मास फ्लो रेट के बजाय प्रेशर का ग्राफ बनाते हैं। तो ये लेफ्ट साइड पे वर्टिकल एक्सिस पे जो है प्रेशर है और राइट साइड पे भी प्रेशर है। ये दोनों प्रेशर की करंट दो कर्व्स हैं, ए और बी दिखाई दी। ये नोजल की लिमिट्स है, इनलेट और आउटलेट 1 और 2। ये वर्टिकल लाइन है 1 और 2 शो करती है नोजल का इनलेट और आउटलेट। तो अब आप देख रहे हैं कि शुरू में P1 जो है मैक्सिमम है, ठीक है, लेकिन पहली कर्व जो A है तो आउटलेट प्रेशर उसका P2 है। P2 जो है इसको बैक प्रेशर कहते हैं। तो बैक प्रेशर क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक में जा रहा है, तो बैक प्रेशर इज ग्रेटर देन P क्रिटिकल। यहाँ ये जो ये वाली बीच वाली लाइन है PB इज इक्वल टू PC, ये वाली लाइन ये PB इज इक्वल टू PC, ये ऊपर से पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। ये दूसरी लाइन जो है PB इज इक्वल टू PC, ये वो लाइन है। ये जो लाइन A है इसमें अभी PC क्रिएट नहीं हुआ आउटलेट, यानी मैक्सिमम फ्लो नहीं हुआ, तो बैक प्रेशर इज ग्रेटर देन PC। तो यहाँ बैक प्रेशर के बराबर अगर PC हो जाए, PC इतना ड्रॉप हो जाए कि बैक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो ये चोकिंग कंडीशन हो जाएगी और यहाँ क्रिटिकल कंडीशन आउटलेट पे यानी कि सोनिक वेलोसिटी अचीव हो जाएगी। और अब चूंकि सोनिक वेलोसिटी अचीव हो गई है व्हिच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड, इससे ज्यादा वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो सकती। मजीद प्रेशर ड्रॉप कर लें आप, बैक प्रेशर PC से नीचे कर लें, तो वो ये तीसरी लाइन है नीचे वाली, PB इज लेस देन P क्रिटिकल। तो उस सूरत में क्या होगा कि चूंकि सोनिक वेलोसिटी नोजल के आउटलेट पे अचीव हो चुकी है, अब उसको मजीद प्रेशर ड्रॉप करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रेशर वेव ट्रेवल करती है विद वेलोसिटी ऑफ साउंड, और वेलोसिटी साउंड ऑलरेडी सेक्शन 2 पे है। डाउनवर्ड फ्लो, अपवर्ड फ्लो, यानी कि जो प्रेशर ड्रॉप करने से जो प्रेशर वेव क्रिएट होती है उसको हम कहते हैं कि एक्शन। उस एक्शन का रिएक्शन ये कि उस डिस्टर्बेंस को ऊपर की तरफ, यानी प्रेशर वेव को ऊपर की तरफ ट्रेवल करना चाहिए ताकि बताए, थ्रोट पे जाके बताए, यानी मिनिमम सेक्शन में जाके बताए कि जनाब वेलोसिटी और बढ़ाओ, तो वो नहीं जा सकती उधर तक पहुंच, क्योंकि डाउनवर्ड फ्लो इज इक्वल टू अपवर्ड फ्लो। साउंड की वेलोसिटी उधर भी है, साउंड की वेलोसिटी से साउंड ट्रेवल कर रही है,
तो साउंड अपनी जगह रुक जाती है, लिहाजा एग्जिट वेलोसिटी पे कोई असर नहीं पड़ता, वो पीक वेलोसिटी अचीव हो चुकी है, सोनिक वेलोसिटी। तो आप देख रहे हैं यहाँ शॉक, इसको कहते हैं शॉक वेव। प्रेशर तो डाउन होना है, हवा है वहाँ वैक्यूम है या लेस प्रेशर है देन क्रिटिकल प्रेशर, तो उस सूरत में प्रेशर ड्रॉप सडनली होगा, झटके के साथ होगा, और फिर झटके मार मार के डाउन अप डाउन अप डाउन अप जिग-जैग करके वेवी शक्ल में ये जो है ना धमाके होंगे, और ये प्रेशर जाके थोड़ी देर बाद जाके दूर जाके एस्टेब्लिश हो जाएगी। सो दिस इज हाउ सोनिक वेलोसिटी इन कन्वर्जेंट नोजल। अब आपके सामने ग्राफ ऑफ प्रेशर ड्रॉप through a convergent-divergent nozzle and formation of shock waves inside and outside. अगर फ्लो सुपरसोनिक हो जाए, थ्रोट पे क्रिटिकल वेलोसिटी आ जाए, तो डाइवर्जेंट पार्ट में ऊपर जो आपने देखा उसमें डाइवर्जेंट पार्ट था ही नहीं, वो नोजल यहाँ तक था, सिर्फ कन्वर्जेंट तक था। डाइवर्जिंग वाला पार्ट अब इसमें लगा लें तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कहलाएगा। सेक्शन 2 इधर आ गया, थ्रोट इधर आ गया, थ्रोट को हम सी कहते हैं, पॉइंट सी यानी क्रिटिकल पॉइंट। तो अब आप देखेंगे जब मैक्सिमम फ्लो हो जाए थ्रोट पे, तो उससे आगे उसको डाइवर्जेंस मिल रहा है, डाइवर्जेंट नोजल मिल रहा है, तो इसका मतलब ये डाइवर्जेंट नोजल भी नोजल का काम करेगा, फर्दर प्रेशर ड्रॉप होगा और वेलोसिटी मजीद बढ़ेगी, सुपरसोनिक में जाएगी। तो सेक्शन 2 पे हम सुपरसोनिक वेलोसिटी में मिलेगी, लेकिन ये उस वक्त मिलेगी जब थ्रोट पे क्रिटिकल कंडीशन अचीव हो जाए। तो थ्रोट में क्रिटिकल कंडीशन यहाँ दिखाई गई है, ये रही पीसी है, ये जो कर्व ए और बी दो कर्व दिखाई गई हैं। कर्व ए जो है 1 से लेकर ए तक, कर्व ए थ्रोट तक इसकी वेलोसिटी प्रेशर ड्रॉप होता है, लेकिन जो ही थ्रोट आ जाता है तो आगे डाइवर्जेंट है, क्योंकि सबसोनिक वेलोसिटी पी सी अभी अचीव नहीं हुआ, तो सबसोनिक वेलोसिटी ट्रेवल्स लेस देन साउंड वेलोसिटी, तो डाइवर्जिंग पार्ट में वो डिफ्यूजर का काम करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू होगी, प्रेशर इंक्रीज होना। अब देख रहे हैं कि प्रेशर ड्रॉप हुआ, थ्रोट के बाद फिर इंक्रीज हो गया। उसके बाद ये कर्व जो है नीचे तक जाती है क्यू आर तक, 1 क्यू आर। तो इसमें पीसी अचीव होने के बाद प्रेशर मुसलसल ड्रॉप होता है, और नोजल के अंदर भी अगर जरा सा कोई डिस्टर्बेंस हो, कोई चीज रखी हो, तो उससे शॉक लगेगा और प्रेशर ड्रॉप, प्रेशर इंक्रीज होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और ताकि एग्जिट पे प्रेशर जो है क्रिटिकल प्रेशर से बढ़ जाए। लेकिन नहीं भी हो सकता, तो फिर वो पॉइंट आर आएगा। जब आर पे पहुंचेगा तो चूंकि वो सोनिक वेलोसिटी से ज्यादा है, यानी सुपर क्रिटिकल है, तो यानी सुपरसोनिक है, तो उस सूरत में बाहर जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो फर्दर ड्रॉप उसमें से झटके के साथ होगा, शॉक वेव के साथ होगा, और ये वही सूरत होगी जो सबसोनिक में होगी। यहाँ शॉक नोजल के अंदर डाइवर्जिंग पार्ट में भी हो रहा है, ये कर्व भी, और एग्जिट में भी हो रहा है, आउटलेट पे एटमॉस्फेरिक में भी हो रहा है, आउटसाइड द नोजल भी हो रहा है, और दैट इज पार्ट सी। अब एक सूरत हाल ये भी हो सकती है कि ग्राफ ऑफ द प्रेशर ड्रॉप थ्रू अ कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल एंड फॉर्मेशन ऑफ शॉक वेव इनसाइड सुपरसोनिक नोजल। ये देख, डाइवर्जिंग पार्ट में शॉक्स बाहर नहीं, बाहर लगने के बजाय शॉक वेव्स अंदर भी लग सकती हैं नोजल के अंदर, डाइवर्जिंग पार्ट में। तो ये भी हो सकता है, ये इंतहाई खतरनाक ऑपरेशन है, तो उसमें नोजल डैमेज हो सकता है और उसको झटके लग सकते हैं। अगर ये हवाई जहाज है तो उसको झटके लगेंगे और वो गिर भी सकता है। तो ये जो P1 से लेकर कर्व ए बी सी डी का, कर्व ए जो है सीधी सीधी है, ये उस सूरत में कोई फ्लो नहीं हो रहा, P1 इनलेट और आउटलेट पे सेम प्रेशर। जो ही आउटलेट प्रेशर डाउन करना शुरू करेंगे, कर्व बी बनेगी, मजीद डाउन करेंगे तो क्रिटिकल कंडीशन आ जाएगी, मैक्सिमम फ्लो रेट हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू है PC = 0.528 P1, जो पहले हम क्रिएट कर चुके हैं 0.528। तो कन्वर्जिंग पार्ट में ये बनेगा। डाइवर्जिंग पार्ट में चूंकि वेलोसिटी जो है ना क्रिटिकल हो गई है, डाइवर्जिंग पार्ट में सुपरसोनिक फ्लो होगा, लेकिन प्रेशर डाइवर्जिंग पार्ट में अभी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और इनलेट पे क्यों इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह ये कि अभी पूरी तरह यानी कि वहां जाके पूरी तरह सोनिक नहीं हुई। तो सुपरसोनिक जब होगी, अगर ये कर्व नीचे और आ जाए, प्रेशर और ड्रॉप हो जाए, क्रिटिकल से नीचे आ जाए, फिर ये कर्व इधर आएगी, जे पे आएगी, ऊपर सी की तरफ नहीं जाएगी।
तो नीचे जे की तरफ आते आते रास्ते में उसको 3 शॉक लग रहे हैं, कर्व डी ई और एफ, डी डी ई और एफ। यहाँ इसको 3 मरतबा शॉक, यहाँ शॉक लगा, इसका प्रेशर इंक्रीज हो गया तो एग्जिट ये हो जाएगा। यहाँ नहीं लगेगा तो यहाँ आगे जाके ई पे लगेगा और प्रेशर एकदम क्रिटिकल से ऊपर हो जाएगा और एग्जिट जो है ना सबसोनिक हो जाएगी। उसके बाद यहाँ भी लगा तो एग्जिट से थोड़ा पहले, जे से थोड़ा पहले एफ का शॉक लगेगा और पॉइंट प्रेशर P3 हो जाएगा। तो P3 इज अगेन ग्रेटर देन P क्रिटिकल। अगर जे तक पहुंच गया बगैर शॉक के तो फिर बाहर शॉक लगेगा जो सब ऊपर में आके। सो दिस इज हाउ what happened. This is how this graphs are done and shows the situation of pressure drop in convergent nozzle, convergent-divergent nozzle, subsonic nozzle, sonic nozzle and supersonic nozzle. तो डेरिवेशंस आपको अलग से दे दी जाएगी और उसके बाद जो टॉपिक है वो हम आपको बता देंगे। जेट्स का हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और दिस वाज 32 नंबर। तो आपको आप हेलो जरा माइक ऑन करें। आर यू हियरिंग मी? हेलो 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 हेलो। यस सर। अच्छा, मैंने जो कल रात को कुछ भेजा था वो मिल गया आपको ईमेल पे? यस सर मिल गया। हाँ, उसमें आपका शेड्यूल है अंदर का। तो आपकी क्लासें 10 तारीख तक होंगी, फिर आपकी छुट्टियां होंगी, फिर आपका इम्तिहान होगा, फिर कॉलेज जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल रिमेनिंग करने होंगे वगैरह वगैरह। वो आप टाइम टेबल को फॉलो करें, ठीक है? वक्त से पहले वहाँ वक्त से पहले पहुंचे। अगर कोई समर में अगर कोई सब्जेक्ट आपको देना है जो ग्रेड इंप्रूव करने या कोई सब्जेक्ट में आप अपीयर नहीं हुए थे या फ्रीज किया था उसको अपीयर होना चाहते हैं तो वो आप मिस रोजीना से कांटेक्ट करेंगे, वो आपको रजिस्टर करेगी, आप रजिस्ट्रेशन फीस देंगे और उसमें समर में अपीयर हो जाएंगे। वो आपको टीचर भी बता देंगे कि कौन टीचर आपको पढ़ाएगा। इसमें क्लासेस नहीं होंगी, ये सिर्फ गाइडेंस स्टडी है। यानी आपको सिर्फ गाइडेंस किया जाएगा, फला फला चैप्टर पढ़ लो, फला फला प्रॉब्लम कर लो, दैट्स ऑल, ठीक है? और उसके आपको फिर फाइनल इम्तिहान होगा, वही टीचर आपसे लेगा, ठीक है? जो भी नंबर देने हैं वही देगा, चाहे वो मिड टर्म तो नहीं होता, वो 1 महीने में सारा 3 महीने का कोर्स, 1 महीने 2 महीने का, यानी क्या है 1 महीने के अंदर पूरे सेमेस्टर का कोर्स खत्म करना होता है। पूरे सेमेस्टर में जितना सब्जेक्ट का कोर्स होता है वो खत्म करना होता है। तो वो टीचर पे डिपेंड करता है, वो आपको A to Z पढ़ाएगा नहीं, वो आपको गाइड करेगा। सिलेबस आपको मालूम है, आपको गाइड करेगा, बेटा ये चीज करके आ। मकसद आपको पढ़ाना है और आपको टेस्ट करना है कि आपने वो पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया। तो उसके बाद आपको फिर नंबर मिलेंगे, डिग्री मिलेगी, उसके बगैर नहीं मिलेगी, ठीक है जी? यस सर। ओके जी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।